Thank you, Misha, for the brief introduction, and assalamu alaikum, everyone. So today I'll be talking about an application that we are doing as a side project at Confiz, and this is we call it visitor tracking, and this is a smart way of understanding the dynamics of the customer that are maneuvering in the retail store, and we want to understand their interests, and based on that we can take some actions. So there is a cool GIF that you can see over here, and we'll understand how this works and what is the engineering behind it. So let's see. So the agenda of my presentation will be, I'll be sharing the problem statement with you all. Then we'll move on to the use cases. There's application solved. Then we'll understand what are the components that are being used for this application. Then we'll see what are the challenges and how we are solving that using the architecture diagram. So let's move on. So the problem statement is pretty simple. So आपके पास shops के अंदर जो है वो cameras, surveillance cameras mounted है, or using the camera streams from those surveillance cameras, you want to track people when they enter the store. वो किस जगह पे जाते हैं, किस जगह कितना टाइम जो है वो रुकते हैं, चीजों को देखते हैं. So based on all these metrics, eventually at the end of the day, you are able to make some good decisions around it. So what you can say is like, let's see in the use cases rather. All right. So what you can do with the help of this application is you can generate the routes. So a customer enters, a number of customers enter into the store, and you want to see कि आपके ज़्यादातर customer जो है वो store में enter होने के बाद either they move straight towards something, or they prefer the left aisle or right aisle or something like that, or even you can identify when you'll be visualizing the routes, you'll be able to identify कि आपके customers जो हैं वो prefer ज़्यादातर करते हैं कि वो बिल्कुल सीधा चले जाते हैं या right side पे हो जाते हैं. राइट साइड पे जितनी भी शेल्फ्स हैं उनकी तरफ चले जाते हैं, और लेफ्ट वाले शेल्फ्स जो है वो अटेंशन आपकी नहीं ले पाते इनिशियली जब कस्टमर एंटर हो रहे हैं आपकी शॉप के अंदर. So when you visualize the route using this application, eventually you get to know कि आपकी लेफ्ट साइड पे कोई ऐसा टेबल पड़ा था या कोई ऐसी चीज पड़ी थी जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड पे नहीं जा पा रहा था. सो आपके लेफ्ट साइड पे जो इनिशियली जितने भी शेल्फ्स थे या आइल्स थे उनको उस तरह से अटेंशन नहीं मिल रही थी इन कंपैरिजन टू द अदर वन. और दिस टोटली एक्सप्लेन्स यू कि आपकी सेल्स जो हैं for those items why they are lacking. So this is a use case that can be solved with this application. The other use case is that we can gauge the customer engagement time. So आपका customer जो है वो किस जगह पे जाके रुकता है, किस product को ज़्यादा attention देता है. So based on that you can take some decisions regarding product placement. Similarly, the preferred aisle is the similar use case. So then we can also use this to track people for the surveillance purposes. We can also have the head counts of the people. So as we are tracking the people with a unique ID, so eventually at the end of the day we can identify or we can say कि आपके store के अंदर कितने number of customers जो है वो आए हैं, और आप उन customers को कितनों उनमें से कितने customers को convert कर पाए हैं. So आपकी शॉप जो है उसमें रश लगा रहता है हर वक्त, लेकिन आपकी सेल्स जो है वो ड्रॉप कर रही हैं. So what are the reasons behind that? This application will actually help you to understand what are the reasons behind that. आपके products को engagement नहीं मिल रही है, आपके products को engagement मिल रही है, लेकिन जो है लोग कुछ products की तरफ जा ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे. So these are some of the things which we can actually identify, or we can correct them if we have some numbers or analytics behind that. And finally, we can have, so if we have placed a new product in our store and we want to see the analytics for that specific product, so what we can do is, just create a region over that product, or then we can have the head counts or the engagement time specific to that region. So these are some of the use cases that we can do with the help of this application. So this picture is actually
So the color coding is representing the density of the people or the engagement time, whatever you can say. So the darker region actually represents कि आपके यहाँ पे जो है वो ज़्यादा headcount जो है वो maximum था. The bluish region is actually representing कि यहाँ पे आपका जो headcount है that was less. So you know when you see things visually, you can better understand them and better interpret them. And that's what this application is basically generating for you. So इसको देखते साथ ही हमें पता चल जाता है कि हमारे जो इस कैमरे व्यू के अंदर लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं, जितने भी शेल्फ्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो ज्यादा अटेंशन गेन कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू आपकी एक जो सेंटर में टेबल है या आपके बैक साइड पे जो कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक सम इंटेलिजेंट डिसीजंस. सो आपके जो स्टोर मैनेजर हैं वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट किस तरह से करनी है. सो फॉर एग्जाम्पल वी सी के हमारे पास जो कॉमन बेकरी है उसके अंदर ब्रेड और एग्स जो है वो काफी ज्यादा बिकते हैं. सी और आप जो भी बंदा कोई भी सामान लेने आता है वो इवेंचुअली अपने कैश काउंटर पे जाता है और वहां पे जाके बिल पे करता है. सो कैश काउंटर के पास यू मस्ट हैव सीन के चॉकलेट्स पड़ी होती हैं या च्युइंगम्स पड़ी होती हैं और हम वो चीज नहीं लेने आए होते लेकिन हम फिर भी वो ले लेते हैं. सो दैट इज द मेन रोल ऑफ प्रोडक्ट प्लेसमेंट. सो इफ यू प्लेस द प्रोडक्ट एट अ राइट लोकेशन, the sales of that product will get up. So that's what this application will actually help the store manager to for the product placements. Similarly, so that this was like a heat map for a single camera, and when we want if we want to see the heat map for the whole store, so आपके एक स्टोर के अंदर एक से ज्यादा कैमरे लगे हो सकते हैं और आप सारों का एक इकट्ठा 360 व्यू लेना चाहते हैं. So what you can do is you can basically map all that information on this floor map. So इससे आपको एक horizon मिल रहा है, एक bird's eye view मिल रहा है बेसिकली कि आपके स्टोर के अंदर कौन सी लोकेशंस हैं जो कि मैक्सिमम अटेंशन ले रही हैं और कौन सी ऐसी लोकेशन हैं जो कि बिल्कुल जहाँ पे कस्टमर जो है उनका विजिट नहीं हो रहा. So based on that, it is a simple thing कि you can see why you can understand कि मेरा एक certain product जो है उसकी क्यों इतनी sales high नहीं है या मुझे क्यों जो है वो उसको replace कर देना चाहिए या उसकी product placement जो है उसको shift कर देना चाहिए. So let's move on to the components that are being used for this application. So there are two main components. One of them is the detector and the other of them is tracker. So the detector is basically responsible कि वो objects को track कर रहा है in the video stream, and the tracker is responsible कि वो अपने objects जो है उनको track कर रहा है. So detector आपको detect करके देता है कि मेरे पास जो इस वक्त image आ रहा है उसके अंदर फलां जगह पे जो है वो humans मौजूद हैं. और tracker क्या कर रहा है कि उनको ट्रैक कर रहा है कि जब वो एक सर्टेन ह्यूमन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है तो वो उसकी आईडी साथ लेके जाता है कि ये बंदा नंबर 1 है और ये जो 1 नंबर आईडी वाला बंदा है ये यहाँ से यहाँ तक गया. सो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू हैव इज कि आपके पास जो नंबर 1 पर्सन था उसका एक पूरा ट्रैक मौजूद होगा कि वो कहाँ से कहाँ तक गया है, कितनी देर रुका है किस जगह पे और उसका क्या राउट था. So based on that, if by the end of the day I map all the routes and I map all the engagement times of the customer, I get those heat maps, and with those heat maps I can take some good decisions. So let's see, what are the constraints of this application? So अगर आप अपना कोई भी product किसी को sell करना चाहेंगे तो you want that to be cost effective. So here we are talking about a vision related thing. So we do know that processing vision or any images or video streams is quite computationally expensive. We usually require a GPU for the computation, and a GPU actually consumes a lot of electricity. So we want to reduce that. So our constraint was that we had to build the models that had minimum memory footprint or require the minimum amount of processing so that we do not require GPU for the computations, and we can use a simple commodity hardware like the Intel i7 जो हमारे पास laptops हैं या घर में desktops हैं. So they are quite cheaper in comparison to the GPUs. So
what if we can prune our models so that they can run on simple commodity hardwares? So that was one of the constraints, and we tried to resolve that. So apart from that, we had other challenges as well. So we all know that if we have a model and we want to deploy it at some location, we have to train that model on the data. And we have heard in the previous slides that the major blocker for us is the data labeling part. So if अगर कोई human जो है वो आपके images को label कर रहा है और फिर आपका मॉडल उन लेबल्ड इमेजेस को कंज्यूम करके ये सीख रहा है कि बंदे को कैसे मैंने डिटेक्ट करना है या कैसे ट्रैक करना है, सो दैट इज अ टाइम टेकिंग एंड एन एक्सपेंसिव टास्क. So what you can eventually do is, so you want to cut that part so that you can reduce the time to deployment, and also you want to cut the cost. So this was one of the constraints, and let's see how we are solving all these issues in this architecture diagram. So इस डायग्राम के अंदर जो हमारे पास डॉटेड एरिया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ कमोडिटी हार्डवेयर और अ सिंपल हार्डवेयर व्हिच कैन बी इंटेल i7 और समथिंग लाइक दैट. एंड जो डार्क लाइन वाला एरिया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग a big machine like a GPU. So we have actually separated out the components that are for that can be run on a simple computer versus the components that will be running on the main machine or the GPU. So let's see how it works. So first of all, we have the data fetching module. So data fetching, if we want to deploy our solution at a certain place, we have to have some images for our models to train on for that location. So and also this video data is quite private to the companies, and they do not want to share that. So what you can do is you can have your computers placed in their location on the premises, so they are comfortable with the security of their data, and you can fetch the images for the models for getting trained on. So that this is what this data fetching module is doing here. Then we want to train the models using these images, but the training part requires the GPU. So if we run the GPU on premises using client ki electricity use kare, so that is a big cost, and we somehow want to cut that cost. So what we do is actually, so we and also if we want to push those images over some network, we have a limited bandwidth, and images thing is quite large and has a big memory footprint. So if you are moving like 200 images, each of them will be like 1 MB. So that will be 200 MB of data that will be pushed over the network. So that's quite a lot. So what we can do is we can simply sample the images, and we can take the least amount of the images that are required to train a model, and then we can so हम वो burden बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे उस limited bandwidth के ऊपर वो चंद images जो हैं वो push हो जाएं. So we push those images to the GPU machine, which is at some other location. So that's how we avoid the limited bandwidth challenge. And then comes the annotation part. So now we have two options with us. Either we can annotate those images using some human resource. That will be one costly, and two, that will be time consuming. So we want to mitigate both of these risks. So what we can do is we can have a better network that is bigger in size. So we can utilize that network, and we can auto annotate the images using some network, mitigating the cost and the time as well. And and using those annotated images, we can tune our models, and then we can simply deploy the model. So when the models are deployed, since they are running on a commodity hardware, so by the end of the day, the models push their data over the web interface, and eventually we have those heat maps that we saw in the earlier slides. So this is the architecture that we have tried to come up with to solve the challenges that we were facing. And that's how this fancy looking GIF is working. That was the engineering behind that.
So these are some of the people that working on this. They are working on this project since it is a side project. So this is some extra work that we are doing. And yeah, thank you everyone. So Nofil, we have one question. Can you move back in your slides? Okay, the previous slide in which you showed the components. Okay, so the question is, what are the numbers showing at the top? And is that unique for the customer whenever he revisits? So the picture is basically representing the detector, and so so detector does not give us the ID of the person. So the number on the top of the bounding box is the confidence. So the detector is this much confident that this is a human. So this is the number. The detector does not give us the ID. For example, this is number 1, this is number 2, person number 2, person number 3. So the tracker will be doing that part. Yeah. Okay, thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा चंद सवालात हैं। पहली चीज़ ये कि जो आप ओवरलैपिंग किस तरह कर रहे हैं डिटेक्ट, क्योंकि मल्टीपल कैमरास हो सकते हैं और मल्टीपल कैमरास एक सिंगल रीजन को भी कवर कर सकते हैं, तो उसको चीज़ को किस तरह कर रहे हैं? क्या आप वेक्टर स्पेस में शिफ्ट कर रहे हैं अपने इमेजेस को लेके? और फिर सेकंड, आपने जब आर्किटेक्चर का डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि जो मिनिमम इमेजेस हम करते हैं, लेते हैं फ्रॉम यूजर्स, सो हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज द मिनिमम इमेज, what are minimum image number? So second question is this, and third, आपने क्लाइंट से जब डाटा ले रहे हैं वहाँ पे फेडरेटेड लर्निंग यूज कर रहे हैं या फिर जो है डिफरेंशियल प्राइवेसी फेडरेटेड लर्निंग यूज कर रहे हैं फॉर कीपिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिंग द डाटा ऑन प्रेमिसेस, या फिर जब बस आम तरीके से हम जैसे एक रखा हुआ डाटा वहाँ पे हम फेच कर लेंगे, वहीं पे मॉडल ट्रेन कर लेंगे, कुछ इस तरह कर लेंगे, क्या प्रोसीजर है वहाँ पे? ये 3 सवाल है। सही। So let's start in the reverse order क्योंकि मुझे आपके शुरू के सवालात याद नहीं हैं। So regarding the privacy thing, so we have placed our so we have decided to place, this is not a working thing, so we are working on it. So we have decided to place the computer on the premises. So at the location जहाँ पे client अपना data खुद fetch कर रहा है और खुद उसको देख रहा है, surveillance कर रहा है. So we decided to put the computer in that location. Or since it is in that location, this doesn't require any security because it is already on the premises. The second question. How do you decide minimum number? All right. So that is basically based on the empirical thing. So we have tried to experiment with different ranges of images, and we have come up with a number for our models. And the third question is, how do you work with common places with multiple cameras? Okay, so I've so the last point, like specific regions count. So this is something we can define the region for a certain camera, और फिर उस कैमरे की जो भी एनालिटिक्स आ रही होंगी वो स्पेसिफिक रीजन में आ रही होंगी. So based on that we can actually put a check on that camera के certain bounding boxes को वो eliminate कर दे, बाकी वो count कर ले. सही. और अभी जो पहले सवाल हुआ था, सबसे पहला आपसे सवाल हुआ था और ट्रैकिंग के लिहाज से कि किस तरह आप वो बाउंड्री बॉक्स का समझ आ गया, कॉन्फिडेंस समझ आ गया, ट्रैकर समझ आ गया, अब हम ट्रैकिंग कर रहे हैं तो क्या वो यूनिकनेस किस तरह कर रहे हैं आप लोग? So basically ऐसा होता है कि आपके पास जब डिटेक्टर ने आपको एक बंदे का बाउंडिंग बॉक्स बना के दे दिया, so the tracker is responsible कि वो उस बंदे की कुछ एट्रीब्यूट सेव कर ले. So for example, कॉमन एग्जांपल है, इस तरह से बिल्कुल नहीं होता लेकिन just to understand, so आपके पास डिटेक्टर ने आपका एक बाउंडिंग बॉक्स डिटेक्ट किया कि इसके अंदर एक ह्यूमन है और उस बंदे ने फॉर एग्जांपल रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी. सो जो आपका ट्रैकर है वो इस तरह की उसके एट्रीब्यूट्स जो है वो चूज कर लेता है, और फिर जब डिटेक्टर उसको दोबारा से बाउंडिंग बॉक्स से देता है तो वो देखता है कि इसमें कौन से बंदे की रेड शर्ट है, दैट विल बी पर्सन नंबर 1, थिंग्स लाइक दैट. थैंक यू. थैंक यू. So no. अस्सलाम वालेकुम. वैसे जस्ट अ थॉट कि अगर कोई इवेंट हो रहा हो जिसमें कोई सेम थीम इवेंट्स जो होते हैं
तो आई थिंक ये सोल्यूशन उधर चल जाएगा। So basically मैंने again वो naive example दी है color of shirt वाली। ट्रैकर बेसिकली आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स निकाल रहा होता है फ्रॉम एन इमेज, सर्टेन फीचर्स निकाल रहा होता है। बेसिकली जो यूनिकनेस इंश्योर कर रहे हैं आप वो डिटेक्टर से कर रहे हैं। डिटेक्टर से डिटेक्ट कर रहे हैं, ट्रैकर से यूनिकनेस इंश्योर कर रहे हैं। ट्रैकर के बाद यूनिकनेस क्राइटेरिया सिलेक्शन जो है वो ट्रैकर से हो रही है। ट्रैकर से हो रही है। तो वो सेम रहती है हमेशा, So मतलब इन एनी basically- एनवायरनमेंट इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट एंड द ऑडियंस, या ये एक स्ट्रिक्ट रूल है कि जी यूनिकनेस इन्हीं बेसिस पे होगी, और इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट्स एज वेल। लाइक इन दिस केस यू आर कंसीडरिंग ह्यूमंस एज ऑब्जेक्ट्स, बट ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग। तो एनवायरनमेंट और ऑडियंस पे डिपेंड करता है यूनिकनेस क्राइटेरिया, या इट्स अ रूल। सो हम लोगों ने अपने जो एप्लीकेशन है उसको मॉडिफाई किया हुआ है कि वो सिर्फ ह्यूमंस को ही डिटेक्ट करेगी। सो ऑब्जेक्ट वाली जो है वो चीज बीच में से मिटिगेट होगी। दूसरी ये चीज है कि आप हमारा मेन कंसर्न ह्यूमंस है, सो दैट इज व्हाई वी आर The retail industry outside the human बिल्कुल। beings भी इसकी एप्लीकेशन काफी बिल्कुल बिल्कुल वसी पैमाने पे हो सकती बिल्कुल, है, if you think बिल्कुल। about it. बिल्कुल। So since we are only targeting the retail industry at the moment, so this was our concern. So इसीलिए हमने सिर्फ humans को रखा हुआ है। दूसरा ये कि आपके पास जो ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो आपके पास जो भी इमेज आता है उसके फीचर्स निकाल लेते हैं और फिर वो बेसिकली उन फीचर्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। सो दैट इज व्हाई यूनिकनेस जो है वो इंश्योर होती है। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। इसमें आप हार्ड कास्केड्स वगैरह या वॉयला जोन्स एल्गोरिथम्स तो नहीं यूज कर रहे फॉर प्रोसेसिंग? सो हम डीप लर्निंग के मॉडल्स यूज कर रहे हैं, बट वी हैव प्रूव्ड देम so that they are able to run on commodity hardware. It will save a lot of time, like you use hard cascades or Euler Jones algorithms. But again, you get a hit on accuracy as well. All right. Thank you, everyone.